हरे कृष्णा माता जी, वी आर लाइव। हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत हरे कृष्णा माता जी, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ वक्रेश्वरी एक्सक्यूज मी वक्रेश्वरी माता जी आज इंटरव्यू के लिए हैं और उनका हमको संग मिलेगा। आइए हम सब पहले माता जी को एक बार वेलकम करें 3 बार अब हमारे स्टाइल में हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Hare Krishna Mataji, thank you so much for giving association to us today and giving your time. And I will just introduce you to Mataji to the audience in Hindi. Thank you for Mataji, inviting. yeah, Mataji, it's our pleasure. Thank you so much for your mercy. एंड माता जी बहुत सालों से माता जी इस्कॉन में हैं। माता जी का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा बताऊंगी, आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। माता जी ने बहुत सारी सेवाएं इस्कॉन में करी हैं और कर भी रही हैं अभी। तो माता जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया था 1989 यूक्रेन के कैपिटल कीव जो सिटी है, माता जी ने वहां पे इस्कॉन ज्वाइन किया था। और माता जी बाई मटेरियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से माता जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इन्होंने बैचलर्स इंजीनियरिंग में किया था, डिग्री ली थी और उसके बाद माता जी डिवोटी बन गए। माता जी की दीक्षा 1992 में हुई थी, फर्स्ट इनिशिएशन, एंड 1997 में माता जी को ब्राह्मण दीक्षा मिला था। माता जी बहुत सारी सेवाएं करती है। माता जी बुक्स में, श्रील प्रभुपाद की बुक्स में माता जी को बहुत सेवा करने का अवसर मिला, क्योंकि माता जी ट्रांसलेशन में बहुत काफी एक्सपर्टीज है उनकी, रशियन ट्रांसलेशन में। तो माता जी ने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को यूक्रेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस टाइम उनके जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत जगह ट्रांसफर हो रहा था। उन सिचुएशंस में माता जी ने सेवा की है, प्रूफ रीडिंग की है, बहुत सारा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। और इस वजह से माता जी ने श्रील प्रभुपाद की बुक्स को बहुत डिटेल में स्टडी करने का उनको मौका मिला। 1989 में जब माता जी ने ज्वाइन किया था इस्कॉन, तो पहले 2 साल उन्होंने ग्रंथ वितरण किया, कीव सिटी में ही ग्रंथ वितरण किया। और जो माता जी की जो फर्स्ट संकीर्तन पार्टी आश्रम था यूक्रेन में, माता जी उनकी उस फर्स्ट पार्टी की मेंबर थी। तो वो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं इस समय। और फिर 1990 से 98 तक माता जी ने ये जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में बहुत योगदान दिया है और उन्होंने बहुत सारी ट्रांसलेशन में सेवाएं की हैं। और उस टाइम माता जी भी जैसे मेरे से बात हो रही थी, माता जी कह रहे उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था उस समय, क्योंकि सुबह से शाम तक माता जी लोग उस समय पूरे ग्रंथ में एकदम डूब जाते थे, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में। और फिर माता जी भक्ति शास्त्री जो होता है पढ़ाई इस्कॉन में, उनकी उसकी अध्यापिका की भी सेवा माता जी ने कीव में की है 98-99। और फिर 2000 में माता जी मायापुर शिफ्ट हो गए और माता जी मायापुर में सेवा करने लगे। माता जी ने मायापुर में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाएं करती हैं। जैसे माता जी रशियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए माता जी का बहुत योगदान रहा है। माता जी मायापुर में जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो परिक्रमा होती है उसमें काफी माता जी मैनेजमेंट की सेवाएं करती है, काफी कुछ सेवाएं करती है, कम्युनिकेशन की सेवाएं करती हैं। और 2015 से 17 तक माता जी रशियन काउंसिल गवर्निंग बॉडी ऑफ रशियन कम्युनिटी में भी मायापुर माता जी मेंबर रह चुकी हैं। और माता जी 2008 से 2020 तक उनके जो गुरु महाराज है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, उनकी किताबों को माता जी पब्लिशिंग में सेवाएं करती है। और जो बाकी जो विभिन्न पुस्तकें हैं गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर, इस्कॉन मायापुर पब्लिकेशन, माता जी 12 साल से माता जी वहाँ पे सेवा कर रही है निरंतर। और माता जी बहुत सारे वैष्णवी की जो स्पीकर्स होते हैं, जो उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके जो साथ जो उनके संघ होते हैं, माता जी को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी सेवाएं करती हैं। और वो 2 बार हफ्ते में वैष्णवी संघा ग्रुप के ऑर्गेनाइज करती है मायापुर धाम में। और बहुत सारे ग्रंथों के वो लोग अध्ययन करते हैं, जैसे कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और वो इस तरह से माता जी भक्तों का वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक केयर वैष्णव सेवा करती है माता जी। और यही नहीं, माता जी ड्रामा कीर्तन में भी उनकी जो एक ग्रुप है उनका नाम है मायापुर लीला। माता जी उसमें बहुत सारी सेवाएं करते हैं। वो लोग ट्रैवल करते हैं, कोलकाता आते हैं, जैसे रथ यात्रा में वो लोग प्रीचिंग करते हैं, दुर्गा पूजा में भी प्रीचिंग करते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से उनको बुलाया जाता है। माता जी बहुत सारी सेवाएं में युक्त रहती हैं। और वो लोग सिक्किम, गैंगटॉक, विभिन्न जगह में जाके परफॉर्मेंस करते हैं, सिर्फ प्रचार के उद्देश्य से, सीधा प्रभुपाद के जो मूवमेंट है उसको और प्रचार करने के लिए, श्री कृष्ण के बारे में बताने के लिए। और माता जी गैंगटॉक सिक्किम में प्रचार कर रही हैं। विभिन्न फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी वगैरह है, माता जी लोग श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा में ट्रैवल करके प्रचार करते हैं। इस तरह से माता जी बहुत, और माता जी के एक बहुत सब माता जी की सारी सेवा ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रोमांचक है।
और माताजी बहुत परिक्रमाएं ऑर्गेनाइज करती हैं। परिक्रमा जैसे कि एकचक्र धाम, वीरभूम, पूरी धाम, नवद्वीप धाम, मायापुर धाम। रशियन कम्युनिटीज के लिए माताजी बहुत सारी परिक्रमाओं का आयोजन करती हैं। और माताजी ने एक किताब का उन्होंने किताब की संपादना की है नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर। तो वो माताजी विभिन्न ग्रंथों से लेकर उन्होंने एक किताब की संपादना की है। और वो माताजी डीटी वर्शिप भी करती हैं और अपने गुरु महाराज के लेक्चर सुनना पसंद करती हैं। तो माताजी बहुत सारी सेवाएं करती हैं। तो आइए हम सब मिलके माताजी को 3 बार हरि बोल बोल के फिर से स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So Mataji, I just try to introduce you, though it's difficult to introduce you because the amount of contribution you have given to ISKCON. So it's like I just place us so we also can serve in a like not in that much, but at least in a fraction of way that you have been serving. So Pleasure. It's my Mataji, pleasure because it's mercy of my Guru Maharaj, you know. Just glorify my Guru Maharaj actually, because he was giving all the services to me, and somehow by his mercy I could do something. Only his mercy, his strength, and everything goes back to him. Like, हरी बोल। माताजी कह रहे हैं कि मैं माताजी को कह रही थी कि माताजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके इतना सेवा शायद ना कर पाए, उसका थोड़ा भी अगर हम कर लें तो भी हम मतलब आनंद प्राप्त करेंगे। तो माताजी ने कहा कि जो भी मैं सेवा कर रही हूँ मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं सेवा कर रही हूँ। गुरु महाराज की बहुत कृपा रही है मुझ पे, वो मुझे सेवा देते गए, मैं सेवा करती रही, उनकी वजह से मैं सेवा सब कर पाई हूँ। तो अभी हम इंटरव्यू का प्रश्न शुरू करेंगे, माताजी से जानेंगे उनके सारे बहुत सारी चीजें हमको जाननी है माताजी से। Mataji, I'll ask the question to you in English and then I will translate in Hindi for the audience. Mataji, can you please share with us how did you come to Krishna consciousness? माताजी से मैंने प्रश्न किया है अभी कि माताजी आप हमें कृपा करके बताएं आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। Yes, माताजी। Thank you for asking this because it's very essential. Yes, माताजी। Yeah, gave this mercy to come into contact with the devotees and with this movement. So I met the devotees in 1989 in the Speedway in Kyiv. That's my native place. And the devotees were performing kirtan. And the sound of big drum, I didn't know that it's mridanga. It was like mesmerizing for me. And I was like this. I was just following the sound. And I didn't see them. And then all of a sudden I saw them, and it was a group of like 7 devotees, mainly Prabhujis, males, but they were so effulgent that the first like impression from them, they were just, you know, dazzling. Just some effulgence was coming from them, and it was so penetrating, especially with this kirtan, with the sound. I never got this experience before. The sound just came deeply in the heart and created like a kind of very nice waves. Like I was just really absorbing the sound. Okay, I just translate माताजी। माताजी कह रहे हैं कि माताजी किस तरह से हमने पूछा कि माताजी आप कैसे कृष्णा भावनामृत में आए, तो माताजी कह रहे हैं कि 1989 में उनकी जो सिटी जहाँ पे वो रहते थे, शहर में रहते थे माताजी, कीव नाम का एक शहर है जो कि यूक्रेन का कैपिटल है। तो माताजी वहां पे एक दिन ऐसे कहीं जा रहे होंगे, तो उस टाइम माताजी को एकदम से आवाज आई कीर्तन की। तो बहुत अच्छा लगा उनको, कीर्तन का जो साउंड वाइब्रेशन उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर माताजी वो जो मृदंग की जो आवाज होती है ना, बोला कि ये बड़ा ड्रम था। उस टाइम माताजी को पता नहीं था कि मृदंग किसको कहते हैं, तो बोला कि ये बड़ा जो ढोल है ये कहाँ से बज रहा है। तो माताजी अपना आप अट्रैक्ट हो गए और अपना आकर्षण होके उस तरफ चलते चले गए अपने आप। और जब माताजी वहां पे गए कि उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर भक्त प्रभु जी थे, बहुत एफर्जेंट, बहुत ग्लो कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे प्रभु जी। और उनका जो कीर्तन था वो बहुत माताजी के हृदय को स्पर्श कर रहा था। तो माताजी ने कहा ऐसा मुझे पहले कहीं महसूस नहीं हुआ, इतना सुंदर एक्सपीरियंस, इतना सुंदर एक जो मुझे एक अनुभव हो रहा है। माताजी के हृदय में ऐसे तरंग, एक अलौकिक तरंग सी दौड़ने लगी। तो माताजी को बहुत वो आकर्षण किया, उस कीर्तन के जो दृश्य उन्होंने देखा वो बहुत आकर्षित लगा, माताजी को आकर्षक लगा। यस माताजी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, and at that time, the movement was still underground in Ukraine. Only in 1990 we got like official registration of the movement for Kyiv.
And next to the kirtan, because it was still underground, one girl, lady, like young Vaishnavi, he was just explaining something, showing to the crowd of people some book. And I didn't see what was the book and what she was speaking about. And then when she saw me, I was just coming closer and closer after kirtan. And when she saw me, she started running away from the ground and from myself. And I started chasing after her. You started chasing her? You started Yeah, chasing her? it was so funny. Yeah, like she just turned around and started running away from me. And I started chasing after her in order just to get some explanation of this book. What was the book? What was it, the book about? And finally, I caught her. Okay, I'll just translate, Mataji. That I don't want to miss, any word of it. Such an interesting thing you're saying. I just translate. माता जी बहुत एक रोमांचक एक घटना हमसे बता रहे हैं, हमसे शेयर कर रहे हैं। माता जी जो कीर्तन माता जी ने देखा था, जिस कीर्तन में माता जी आकर्षित हुई थी, तो वहां पे उस समय माता जी ने कहा कि रशिया में इतना ओपन नहीं था, प्रचार बहुत छुप छुप के अंडरग्राउंड होता था, छुप छुप के होता था। तो 1999 में प्रचार को सहमति मिली गवर्नमेंट से, उससे पहले अलाउड नहीं था। तो माता जी उस समय जब 89 और 99 के पहले, तो माता जी पहले वो कीर्तन सुना, तो एक यंग माता जी, बहुत कम उम्र की एक माता जी थी, वो ना कुछ ग्रंथ लेके सबको बता रहे थे, कुछ बता रहे थे फिलोसफी के बारे में। तो माता जी को बहुत आकर्षक लगा, तो माता जी उनके पीछे से जाने लगे, उनसे जानने के लिए कि आप क्या बता रहे थे। उनको पता नहीं कुछ और लगा, तो वो माता जी से पीछे भाग रहे थे। माता जी से छुप के, उनको लगा नहीं कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आ गया, वो डर गए और वो माता जी से भाग रहे थे और माता जी उनके पीछे से भाग रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, कीर्तन क्या है, ये क्या है जो मुझे इतना आकर्षित कर रहे हैं। तो वो माता जी डर के भाग रहे थे और माता जी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, finally I got to know that it was one of the first devotees, first Vaishnavis in Ukraine, Indulekha Mataji. So she was the first person. Indulekha Mataji. Okay, Mataji. Okay. So she was the first person whom I saw, like, and I started like conversing with her, and she told me about this book. Why she was running, she explained, because she saw in me some danger, like probably, some person who is in connection with KGB, that was like repressing institution in our country, KGB. KGB. Yeah. So probably she saw me in this connection with KGB, and I got this book, Sheesh Upanishad, from here, and it was so wonderful. It took me 1 year just to read it through, to complete the reading. 1 year it took, because it was full of these special terms like I never heard before, and this philosophy was so deep and profound. I had to, read like literally sentence by sentence just to understand. So that just got some idea about what was this book about. And after 1 year, and before, she gave me some paper with the address of some centers at that time, like underground centers of Krishna consciousness in Kyiv. And after 1 year, I was able already to go in one of the centers there, which was next to my place. And yeah. तो माता जी ने बोल रहे हैं कि जब वो माता जी जो थी, उनका नाम था इंदुलेखा माता जी, बाद में माता जी को पता चला उनका नाम। तो माता जी, जब इंदुलेखा माता जी पहले भक्तों में से एक, माता जी में से एक थी रशिया में, और उन्होंने फिर बाद में माता जी को बताया, व्याख्या की कि माता जी क्यों डर के, इंदुलेखा माता जी क्यों डर के भाग रहे थे। रशिया में एक ग्रुप है, केजीबी नाम का एक था शायद, अभी आई डोंट नो है कि नहीं। तो वो उस समय जो इस्कॉन के जो प्रचार को वो उसको दबा रहा था। तो माता जी को, इंदुलेखा माता जी को लगा कि माता जी उनमें, उस ग्रुप में से कोई है, इसलिए वो डर के भाग रही थी अपनी सेफ्टी के लिए। तो फिर माता जी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंदुलेखा माता जी ने माता जी को एक पुस्तक दी, शिला प्रभुपाद की, जो है श्री ईशोपनिषद। माता जी बोल रहे हैं
और मुझे की पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मेरे को उसको पढ़ने को पूरा 1 वर्ष लगा। 1 वर्ष क्यों लगा, माता ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि वो इतना डीप था, फिलॉसफी जो ज्ञान था उसमें वो इतना सूक्ष्म था, इतना गहरा था कि मेरे लिए बहुत नया था वो। और मुझे वास्तविक रूप से एक-एक जो सेंटेंस है, वाक्य, एक-एक वाक्य माताजी को पढ़ना पड़ रहा था। वाक्य पढ़ के माताजी समझने की कोशिश कर रही थी। तो उनको पूरा 1 वर्ष लगा माताजी को वो पुस्तक पढ़ने में। और फिर वो पुस्तक के पीछे जो अंडरग्राउंड जो सेंटर्स थे इस्कॉन के, उनका एक एड्रेस दिया हुआ था। तो बहुत कुछ सेंटर्स थे। तो माताजी के जो घर के पास जो सेंटर था कीव में, माताजी उस सेंटर में गए थे। यस माताजी। Yes, it was wonderful experience. First of all, returning to this first my meeting with the devotees, Krishna made me to understand that I have to, literally speaking, running after his mercy, which is coming from the devotees. It was the first realization. I have to strive for this mercy, and the mercy comes from the devotees. You have to catch this mercy, like really grab this mercy. So I could realize it afterwards. Since then, I'm running for the mercy after the devotees. I'm running, I'm chasing for this mercy since then, all my life experience in Krishna consciousness. माताजी अपना जो उपलब्धि है वो अभी बता रहे हैं। माताजी बोल रहे पहली बार जब उन्होंने एक वैष्णव को देखा था, वैष्णवी को देखा था, उनके पीछे माताजी भाग रहे थे, जो इंदुलेखा माताजी हैं। तो माताजी बोल रहे कि उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे ये उपलब्धि हुई, रियलाइजेशन हुआ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना में का जो सीक्रेट है वो है भक्तों की कृपा के पीछे भागना, उसके लिए बहुत लालायित रहना और कृपा को उपलब्ध करने के लिए बहुत लालायित होकर उनके भक्तों के पीछे एकदम भागना कि मुझे कृपा करें इस तरह से। तो माताजी बोल रहे हैं कि उस टाइम में मुझे ये उपलब्धि बाद में समझ में आया कि मैं भक्तों के पीछे, उन्होंने ऐसे ही शुरू किया अपने भक्ति जीवन, भक्त के पीछे भाग के। और माताजी बोल रहे अभी भी मैं यही समझती हूँ, मैं अभी भी भक्तों के पीछे भागती रहती हूँ कि आप कृपया मुझे कृपा करें। माताजी ये बोल रहे हैं कि भक्त के पीछे भाग के माताजी कृष्ण उनकी कृपा के लिए याचना करती रहती है, इस तरह से भक्ति में जीवन में समय बिता रही है। Yes, Mataji. Wonderful, Mataji. Wonderful. Thank you for sharing these deep things, Mataji. Yeah, and then after this, when I started regularly coming for these meetings with the devotees in one of the centers, and all varieties of different things, consciousness became like my own. I imbibed. First, when I came, I saw the altar, and on the altar were Gauranitai deities. And I didn't see the deities as they are, the form of the deities. I saw them as the vases, you know, with the flowers, because the whole altar was so nicely decorated with the flowers. So I was thinking that there's some special vases. I didn't even understand that they were forms of deities. I saw them as vases with flowers. Wonderful. I'll just share, Mataji. Mataji, which temple was it? Was it in Kyiv? No, it was one of the centers. It was in the flat, the center. the flat of the devotees. Okay, in the center you visited the first. Okay. Yeah. I'll just share, Mataji. माताजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें शेयर कर रही है। माताजी अपनी लाइफ से घटनाएं शेयर कर रही हैं। माताजी कह रही है फर्स्ट टाइम जब वो सेंटर में गए तो उस सेंटर में उन्होंने गौणताई के विग्रह देखे, जो ऐसे भगवान जैसे वैसे खड़े थे, दर्शन दे रहे थे। और माताजी को लगा नहीं कि विग्रह है, माताजी को लगा एक्सक्यूज मी कि ये तो कोई विशेष रूप तरह के गुलदस्ते हैं फूलों के, क्योंकि उन्होंने भगवान को इतना फूलों से सजाया हुआ था। तो उनको लगा ये तो दो विशेष प्रकार के दो फूलों के गुलदस्ते हैं जो कि ऐसे फूल लगाने के लिए उपयोग में आ रहे हैं। इस तरह से माताजी को लगा। Yes, Mataji. I'm not able to control my laughter hearing this. So transcendently funny incidents. Yeah, my first connection with Krishna was so funny, and then the second experience was prashadam. My mom was very loving and caring for me, and she used to cook dal. It was on temple, yeah, dal. But when I tasted the dal cooked there, it was so much different. Like I couldn't believe, what is this? I was asking, what is this?
soup. They told dal. How dal? I am eating dal almost every day. I never tasted such a, it's not a dal, but something else is there. So immediately I could feel the difference, but they told me, see, this is just dal. See, this is a, so it was second, but then they explained, and when the deities, they accept the offering done with the love and devotion, then some transformation of this material ingredients is so vivid and becomes so tasteful to eat. It's like Lord Chaitanya experienced his Mahaprasadam Lila in Puri, like how he was eating Mahaprasadam, and he was explaining to the devotees the beauty of Mahaprasadam of the Lord as something tasted by the lips directly with the Lord. Therefore, this nectar of the lips of the Lord always in Prasadam. So that's why it's. Mother, did you say Mahaprabhu sharing the pastimes of having prasad? I just missed the name of the person who was sharing. Yeah, Lord Chaitanya. Lord Chaitanya. Lord Chaitanya Mahaprabhu. Okay, yeah. I'll just translate. माता जी फिर कहे अपना जो माता जी से हमने जब हमने पहले बताया कि माता जी को लाके गुल मिठाई दो, सुंदर गुलदस्ते हैं फूलों के, तो माता जी का बोल रहे हैं कि मेरा जो कृष्णा भावनामृत में जो पहले कदम थे वो बहुत ही रोमांचक थे। और फिर माता जी ने कहा कि फिर जो नेक्स्ट जो द्वितीय जो आकर्षण की वस्तु थी वो थी महाप्रसादम। तो माता जी बोल रहे हैं कि जब महाप्रसादम जब मैंने पहली बार जब मैंने टेस्ट किया, तो मेरी माता जी कह रहे हैं कि उनकी जो माँ है, माता जी हैं, वो माता जी को बहुत प्रेम से उनका बहुत ख्याल रखते थे और माता जी के लिए वो रोज दाल बनाया करते थे। तो उस दिन महाप्रसाद में भी दाल थी। तो माता जी ने कहा, जब माता जी ने टेस्ट किया, उन्होंने कहा ये क्या चीज, इतना स्वादिष्ट ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये दाल है। तो बोले कि नहीं ये दाल नहीं होता, दाल तो मैं रोज अपनी जिंदगी में रोज दाल खाती हूँ, दाल तो इतना स्वादिष्ट नहीं होता, ये तो कुछ और ही है, आप बताइए ये क्या है? उन्होंने कहा नहीं ये दाल है, लेकिन ये महाप्रसादम है, भगवान ने स्वयं इसको आस्वादन किया, इसका स्वाद जो है ये अलौकिक स्वाद हो जाता है, बहुत ही अलग ही स्वाद है, हमें सबको इसका अनुभव है, महाप्रसाद का जो अनुभव होता है, पहला महाप्रसाद का अनुभव। और फिर माता जी ने कहा कि तब माता जी ने एक बात और कही कि जैसे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद की जो लीलाएं हैं उनकी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाप्रसाद का गुणगान करते थे चैतन्य महाप्रभु जी, तो वो कहते थे कि क्योंकि ये जो प्रसाद है, ये जो भोग है, ये भगवान ने स्वयं अपने होठों से स्पर्श किया है, प्रसाद को पाया है, तो इसीलिए वो प्रसाद का जो स्वाद है वो बहुत ही चिन्मय स्वाद हो जाता है। यस माता जी। I think we can proceed further. Yes. Okay. Thank you, Mataji, for sharing your entry in Krishna consciousness. So, next question is Mataji. Prior to joining ISKCON, can you share about your life, what type of life you are living before joining ISKCON, and then what made you surrender to the whole process of Krishna consciousness? I just translate this in Hindi. माता जी को सेकंड प्रश्न हमने पूछा है कि माता जी कृष्ण भावनामृत में आने से पहले कैसा जीवन यापन कर रहे थे। माता जी ने कहा माता जी काफी शिक्षित हैं, और उसके बाद उन्होंने कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं अब मैं अपना जीवन है ISKCON में समर्पित करूंगी, ये माता जी भी जवाब देंगे। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। I think I was a successful person. Like from the beginning, from my childhood, like I was born in good family. I had loving mother, and she gave me so much. And my aunt and my grandmother, they were so caring, and whatever good qualities I got from them. Actually, they were wonderful qualities, and they gave me everything in life. I got good education, very good, graduate from the special secondary school. And then from the higher school graduation, with the highest mark, whatever possibly to get, I got it, highest mark and honors, like gold medal. Medal, it wonderful. Some honors for successful graduation from the school, and the red diploma, that was also very special honors from the higher school for graduation, like that's the highest estimation, highest marks I got.
And then I started my postgraduate study in a very prestigious scientific institute and writing dissertation. But something was missing. Like I was fulfilled. Yeah, like I felt okay. But then something was missing and it was very essential. So life was not so successful from the highest point of view. From material, everything was all right, but still emptiness was there. So I started Okay. reading Bible, trying to, to get something more sublime that was accessible for me at that time. But Bible couldn't answer the questions like very essential for our life, who we are, where we are going, where we came from. So it's not there in the Bible. There is no even idea about soul. There is no idea about reincarnation, like how soul got from the body to body. It's not there, so I couldn't get anything. Like some moral codes are there, but it's not enough. It's quite shallow, right? Yes. So my mind was like scientifically inclined so much, like to go deeply in the matter. So it was not there, this matter. The philosophy was not there. And then because of this, after graduation from the college, I started seeking something else. Yeah, I went to some yoga schools, like with the yoga sessions. I started practicing some like kind of Kundalini yoga, Raja yoga, whatever was Okay. accessible, whatever was there. So I started practicing, and it gave me some, taste for the higher things, Okay. but still it's not satisfying. ओके, आई जस्ट ट्रांसलेट। Because माता जी ने हमने जैसे प्रश्न किया माता जी का जीवन कृष्ण भावनामृत में आने से पहले कैसा था? तो माता जी ने कहा कि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले वो भौतिक दृष्टि से काफ़ी सुखद परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं था और उनकी जो मम्मी थी, माता जी थी और उनकी जो नानी थी, वो लोग बहुत उनका ख्याल रखते थे और माता जी ने सबसे उच्चतम और सबसे उन्नतम स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने शिक्षा वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, सबसे हमेशा सबसे उच्चतम उनको अंक मिलते थे, मार्क्स मिलते थे, हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे और माता जी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ में जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी उन्होंने मुझे मेरी माताजी ने और मेरी दादी जी नानी जी ने मुझे हर चीज़ दी थी, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं थी। और फिर माताजी जब वो कह रहे हैं उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उनको गोल्ड मेडल मिला था, जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्ट एक सम्मानीय एक सम्मान है स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए उस स्कूल में, वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, तो वो उनको गोल्ड मेडल मिला था। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और फिर उन्होंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब उच्चतम स्टडीज़ के लिए गए, तो उन्होंने सबसे वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक जो वैज्ञानिक एक कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाई की और माताजी कह रहे हैं, वहाँ पे भी मैं पढ़ाई में अच्छे से मैंने कर ली, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके लाइफ में कुछ कमी थी, उनको लगता था कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ वो ढूँढ रही थी। और फिर माताजी इसी तलाश में माताजी बहुत कुछ करते थे, योगा कुंडलिनी योगा करते थे और काफ़ी कुछ करते थे। लेकिन फिर उन्होंने बाइबल भी पढ़ा था, उससे पहले उन्होंने बाइबल में क्योंकि माताजी क्रिश्चियन रहते चूँकि क्रिश्चियन है, बाय बर्थ शी वाज़ अ क्रिश्चियन, तो उन्होंने जब क्रिश्चियनिटी में बाइबल में पढ़ते थे, तो माताजी का कहना है कि बाइबल में जो मेरे प्रश्न थे मन में, उनका जवाब बाइबल में नहीं था। तो वो बोलते थे बाइबल में जो लिखा था वो इतना विस्तार में नहीं था क्योंकि मैं साइंटिफिकली सोचती थी, वैज्ञानिक रूप से सोचती थी, वैज्ञानिक तरीके से सोचती थी, तो वो जो उत्तर जो था वो मुझे वो इतना विस्तार में उत्तर नहीं मिल पाता था बाइबल में। बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, ज्यादा डीप नहीं है बाइबल, जो नॉलेज बाइबल का नॉलेज बहुत डीप नहीं लगा उनको, क्योंकि उनके प्रश्न के उत्तर उनको नहीं मिले थे। तो फिर वो ईस्ट की तरफ जैसे हम लोग के जैसे योगा कुंडलिनी योगा ये सब करती थी, लेकिन उनको फिर भी वो चीज नहीं मिल रही थी जो जो तलाश रही थी उस समय। यस माता जी। yeah, but then when I met the devotees, I got all my questions answered like immediately in one stroke. I started after Ishopanishad reading Bhagavad Gita, and I got all the answers. It was so deep, so profound, like, and I could understand with all my heart that yes, this is truth. Like from the beginning, like there was no any doubts. Although scientifically
we have some differences, like official science and whatever is described in Bhagavatam. Some differences are there. Yes. So Yes. it took some time for me to adjust it. Otherwise, I felt so wonderful, like all this deep philosophy became mine immediately. And first wonderful experience, like with the transformation of the qualities, I got rid of my fear of death. I just Fear of remember death. it. Fear of it Fear. because I got this knowledge that I'm eternal. And used to, I was a musician also after, together with graduating from the secondary school, I graduated from the musical school. And Oh. yeah, like almost like every day I was going to practice music in some orchestra. Yeah, we were Okay. playing there. And this practicing, they finished somehow very late, like around 11 p.m. or something. And then I had to go home, and it was very dark always, and very long way to go. But then I remember always this fear when I was going home, like around 12 Mm-hmm. p.m. Mm-hmm. But then, after I met all this wonderful philosophy, I got rid of this. I just caught myself. Oh, there is no this fear anymore. I'm just going like as if I'm totally protected because I'm not just the spiritual soul. I also protected by the Lord. He's the best friend in my heart. So I got this immediately connection, and this connection was manifested in this getting rid of this fear of this Okay. wonderful experience. माता जी कह रहे हैं कि माता जी जब उन्होंने पहला जब उनको जब ईश्वर परिषद मिला, तो जैसे मैंने पहले कहा कि माता जी ने कहा कि मेरे मन में बहुत प्रश्न थे जिनका जवाब मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मैं इतना कुछ ढूँढ रही थी, जो जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर माता जी को जब ईश्वर परिषद माता जी ने पढ़ा, उनको 1 साल ज़रूर लगा, लेकिन फिर वो जब भक्तों से मिली, बोल रहे हैं कि एक बार में मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। और मुझे हृदय में समझ में आया कि नहीं, ये सच है। जो है, ये ट्रुथ है, ये अल्टीमेट सच है। इसके ऊपर कोई सच नहीं है। तो माता जी को बहुत फिर उसका ईश्वर परिषद पढ़ने के बाद माता जी ने भगवत गीता भी पढ़ा। तो माता जी को और भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये जो इसमें लिखा है, ये जो अल्टीमेट ट्रुथ है, ये जो मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा था। और माता जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मुझे परिणाम मिला था ये सब पढ़ने के बाद, कि मेरा जो मृत्यु का जो भय है वो एकदम से गायब हो गया। माता जी म्यूजिक भी माता जी जब पढ़ाई कर रहे थे, उसमें माता जी ने म्यूजिक में भी संगीत में भी उन्होंने पढ़ाई की थी। और माता जी इसी सिलसिले में माता जी रात को देर तक वो घर आते थे, क्योंकि उनको बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करते थे माता जी और उनकी टीम के साथ। तो कभी-कभी रात को उनको 11-12 बज जाया करते थे। तो जब माताजी को पहले ही वो डरते थे कि इतना रात को जा रही हूँ, कुछ होगा कि नहीं, ऐसा हम लोग सब सोचते हैं। लेकिन माताजी जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ भगवत गीता का, ईश्वर ने शब्द कृष्णा भावनामृत का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद से माताजी ने माताजी को ये अनुभव हुआ कि अब तो मुझे डर नहीं लग रहा, मैं रात को 11 बजे जा रही हूँ, 12 बजे जा रही हूँ, लेकिन मुझे भय क्यों नहीं लग रहा? उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो चिन्मय हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। और मुझे उनको ऐसा लगा मानो उनको कोई उनकी देखभाल हो, उनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा हो। उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, मेरे ऊपर कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो माता जी को ऐसा लगा। यस माता जी। So, because of this deep experience, my first experience, I surrendered immediately without thinking for long. And I started to distribute, meeting the devotees, distributing the books, first Bhagavad Gita. Like it was not even printed, it was Xeroxed. And it ओके। was manually made by the devotees. It was also wonderful experience of this first sankirtana. So like this. And then they asked me to join BBT because at that time our country needed Ukrainian books, Srila Prabhupada's book in our Ukrainian language. So the leaders asked me to join BBT as a proofreader. So I did it. And then they asked me also to give my flat because there was no place for the Sankirtana ladies in Kyiv to
be in ashram. There was no sankirtana ashram for the ladies there, but ladies required some space Yes. to live there, and from there to go to follow sadhana in this place, and then to go to sankirtana. And then they asked to give my place, my flat, for this purpose. I gladly gave, and the devotees were living there almost like 20 years or so, until the main temple was built in Kyiv, and then they moved there. But it was first sankirtana ashram for the ladies in Kyiv, and from माता जी कह रहे हैं कि जो भगवद गीता का जो ज्ञान था वो बहुत सूक्ष्म था, बहुत गहरा ज्ञान था, तो माता जी को बहुत अच्छा लगा था। और उस समय माता जी ने जब उनको जब ये अनुभव जो हमने शेयर किया माता जी ने कि वो जब जा रहे थे, उनको डर नहीं लग रहा था, तो फिर माता जी ने इमीडिएटली तभी उन्होंने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद उन्होंने पूरा इस्कॉन में अपना योगदान दे दिया। और फिर उस समय माता जी ग्रंथ वितरण में सेवा कर रहे थे, और उस समय माता जी को फिर जो सीनियर जो उनके वरिष्ठ वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि माता जी हमें अभी इस समय उनके देश रशिया को, यूक्रेन को बहुत सारे यूक्रेन बुक्स की जरूरत थी, क्योंकि उस समय उनके पास ग्रंथ नहीं थे श्रीमद् प्रभुपाद के उनके भाषा में। तो माता जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कृपा करके हमें जो ग्रंथ है वो हमारे बीबीटी में ज्वाइन कीजिए, सेवा कीजिए, हमें ट्रांसलेशन की जरूरत है। तो माता जी ने फिर सेवा करनी शुरू कर दी बीबीटी में। और फिर उस समय जो माता जी भक्त जो थे, जो माता जी डिवोटी थे, उनके रहने की जगह नहीं थी कीव में। तो उस समय कैन यू हियर सम इको? आई कैन हियर सम इको। कैन यू आल्सो हियर सम? डू यू हियर सम इको? सम echo, some echo you hear, or is it clear to you? I can't hear you now. Hare Krishna. I hope I'm okay. Can you hear me clearly, Mataji? Yeah, I can hear you. Yeah, I hear. Okay, I'll manage. तो माताजी ने तब कहा कि उस समय कीव में महिला का आश्रम नहीं था, माताजी का आश्रम नहीं था, तो माताजी ने अपना फ्लैट माताजी इसका आश्रम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपना फ्लैट खुशी खुशी दे दिया सेवा में। और फिर उस समय सब माताजी लोग वहाँ माताजी के फ्लैट में रहते थे, वहां पे रह के फिर सेवा करते थे। वो माताजी का आश्रम बन गया, उनका जो फ्लैट है माताजी का आश्रम बन गया। और उसके बाद में फिर माताजी 20 साल तक डिवोटीज वहीं पे रहे उनके फ्लैट में, और जब कीव में मंदिर बना तो सब भक्त फिर वहां मंदिर चले गए। तब तक माताजी के घर पे सब लोग भक्त लोग रहते थे। तो माताजी used to also stay with everyone, all the Matas there in the ashram. All the Matas used to stay. Sorry. You used to also stay with all the Matajis in the ashram there in your flat. You used to also stay in the same house. Okay. Yeah, because after all, it was my flat, so where to go? Only to my home, and this is the ladies' ashram, so I was staying there together with everyone, and it was the greatest experience in my life. Finally, you can imagine like very small rooms, 2 rooms, one kitchen, one corridor, one balcony, very small, like tiny. Yeah, and finally, from 2 persons there, we grown like into 25 persons in 2 flats. In that flat. Yeah, 25 persons in 2 rooms, and it was first very tight association with the devotees. 25 persons in 2 rooms. माताजी कह रहे हैं कि उनका जो घर था, जो उन्होंने फ्लैट जो दिया था सेवा में, वो भी उसमें रहने का। माताजी आप भी वहीं पे रहते थे? माताजी का मेरा घर तो मैं कहाँ जाती, मैं भी वहीं पे रहती थी। तो माताजी का जो घर था वो सिर्फ 2 कमरे थे छोटे छोटे, एक रसोई घर थी और एक छोटी सी कॉरिडोर की गली थी। तो उसमें माताजी कह रहे कि 2 भक्त थे पहले, और बाद में वहां पे 25 भक्त रहते थे। तो बहुत ही टाइट भक्तों का संग था वहां पे। तो माताजी बोल रहे मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय था वो, एकदम टाइट भक्तों के संग में रहने का मौका मिला था। 25 भक्त 2 कमरों में रहते थे माताजी लोग। माताजी will go to the next question. Yes, we'll go to the next question. Mataji, you want to add something more in this? Yeah, I have so many things about this period of my life, but yeah. Yes. Technically, okay. it was
Okay, just one detail. Yes, We were Mataji. sleeping a whole hour sadhana from the, from the morning, like 3 o'clock. First person to take our bus. 25 people supposed to take bus in the morning, like before And one Mangala Arati. bathroom. Only one bathroom, right? Yeah, to take bus, yes, none. Okay. So first person was waking up and like at 12 midnight or 1 o'clock, and just to be able to give the chance to all other to take bus. And how we were sleeping, one was sleeping in the bathroom, let's see, 4 people were sleeping in the kitchen, like, and 10 people were sleeping in one room, 10 people were sleeping in another room. But to sleep also, we were sleeping like this, head to face, like Okay. Alternate direction. like this, to be as tight as taking as small space as it possible. When you're like this sleeping, then the space is less you're taking. I will share Mataji with the devotee. माताजी ये कह रहे हैं कि उस समय जैसे मैंने पहले कहा, माताजी ने कहा कि छोटे से 2 कमरों में 25 माताजी रहते थे, 25 माताजी। तो उसमें माताजी बोल रहे हैं कि जो पहले जो व्यक्ति से मंगल आरती सब करते थे उस समय वहाँ पे, तो मंगल आरती होगी तो सबको उठना पड़ेगा सुबह। तो पहले जो माताजी जो उठते थे 12 बजे उठ जाते थे, 12 बजे 1 बजे उठ जाते थे वो माताजी लोग, ताकि दूसरों को स्नान करने का मौका मिले, ताकि क्योंकि एक ही बाथरूम था, 25 लोगों को स्नान करना है, मंगल आरती करनी है। तो पहले माताजी 12 बजे, 12:30 बजे, रात को 1 बजे उठ जाया करते थे स्नान, ताकि दूसरों को मौका मिले स्नान करने का। और बोलते हैं माताजी बोल रहे हैं सोते कैसे थे, एक भक्त बाथरूम में, 4 भक्त होते थे किचन में, और 10 भक्त दोनों रूम में, एक कमरे में 10 भक्त, एक कमरे में 10 माताजी। और इस तरह से एक जन का ऐसे बताया माताजी ने, एक जन का सर की तरह, एक जन का पैर, ताकि टाइट, ताकि कम से कम जगह में वो लोग फिट हो जाए। इस तरह से 25 भक्त 2 कमरों में रहते थे, माताजी ने शेयर किया। माताजी वंडरफुल, हाउ मच पॉसिबिलिटी you all have faced for. Yeah, definitely. We just broke all the furniture, whatever was there, and the first flat was packed with furniture. But then when 25 people stayed, everything was broken. Took away all the furniture. Of course, my mother was frustrated, but she could understand like what's going on, and yeah, it was very austere. But Krishna gave me this lesson immediately, a lesson of very close association with the devotees, and the experience of how mercy comes through the devotees. Like in this very tight association, whatever we did was very nectarian. Our sangha, our prasadam, our morning Mangala Aratis, and then chanting, and then everything together. It was very austere beginning, but it was full of mercy. It was very austere but full of mercy, and this actually austerity at the beginning especially, this is the basis of a very deep relationship with Krishna. The austerity like makes the foundation of our devotion. It's very important, especially at the beginning, to get this experience of healthy austerity in Krishna consciousness, so that subdue our senses, subdue our mind, to make it more inclined towards Krishna, not towards sense gratification. So it was great experience. माताजी कह रहे हैं कि उस समय का जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था, माताजी कह रहे हैं। माताजी 1 minute, I think my voice is echoing. I'll just call Prabhuji because other devotees can't hear what I am saying. Just please, Mataji, just give me 1 minute. I'll call Prabhuji because otherwise devotees won't be able to.
I'll try to do. Hare Krishna Prabhu, my voice is echoing. Okay. Hare Krishna Mataji, sorry. So Mataji, I'll translate what you said before. माताजी कह रहे थे कि जो अनुभव था भक्त के साथ रहने का, वो बहुत सारे भक्त एक साथ रह रहे थे, वो बहुत ही तपस्यापूर्ण जीवन था। लेकिन माताजी ने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से अपने इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को दमन करके अपने इंद्रियों के बारे में, अपने इंद्रियों के बारे में नहीं सोच के किस तरह से कृष्ण भावनामृत में जिया जाए जीवन, और किस तरह से अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसमें श्री कृष्ण को रखा जाए, श्री कृष्ण को लक्ष्य करके किस तरह से हम भक्तों के संग में जीवन यापन कर सकते हैं। माता जी ने ये शिक्षा प्राप्त की, और माता जी ने ये भी कहा कि उस समय जो भक्तों का संग जो था, जो उन्होंने उनको ये समझ में आया उस समय कि भक्तों की कृपा बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्तों की जो कृपा है वो उनको बहुत अच्छे से मिली थी, क्योंकि वो बहुत सारे भक्त चल रहे थे, तो उनको लगा कि जो भक्ति का जो मार्ग है, एकमात्र मार्ग है भक्तों की कृपा। भक्तों की कृपा बिना भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो भक्तों की मर्जी के लिए हमें हमेशा लड़ाई करना चाहिए, माता जी का ये कहना है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। I think we can proceed towards third question. Mataji, next question is, since you have been very much serving related to Srila Prabhupada's books like translation, editing, proofreading, can you please give us some tips on how we should study Srila Prabhupada's books? And sometimes when we read, we don't remember. So how do we read it and retain it, remember it, and also apply in our life? So I'll just translate the question in Hindi first. माता ने बहुत सारी मुख्य सेवाएं की है शीला प्रभुपाद के पुस्तकों को लेकर। उन्होंने बहुत से ट्रांसलेशन का काम किया है, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, संपादना का काम किया है। तो माता जी ने प्रश्न किया हमने कि माता जी किस तरह से हम शीला प्रभुपाद की बुक पढ़े, उनको याद, क्योंकि हम पढ़ते तो भूल जाते हैं, तो किस तरह से हम उनको याद रखें और जीवन में उसको अप्लाई कर सके, उसको जीवन में उसका एप्लीकेशन भी कर सके। माता जी से मैंने ये प्रश्न किया है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। I think that's according to my experience. Like first, my experience with the book was in BBT. And in BBT, it's like full absorption from the morning till evening into the whatever they're doing, editing, translating, proofreading. Everything is okay now, technically. I think yes, Madhuri. I think yes, I think it's okay. I mean, manageable. It's okay. We'll manage, Madhuri. You please continue. First of all, the reading or studying should be done systematically. I think that's the first one. Whatever time you can give, but it should be systematically given. Like, if possible, every day is the best. Like for a certain period of time, like 1 o'clock, 1 hour or 2 hours, or even half an hour, whatever you give, but you give systematically to every day or twice a day. You just yourself put your conditions for this, but it should be done systematically so that your mind is prepared for this. And it should be done attentively, without distraction. Try to make it as attentive as possible. Like try to concentrate. You know that at my time for study, I'm giving my full absorption with all my mind. No more distraction from mobile phone, no more distraction from external world. I'm just here in the books. And that's the first one. And the second, it should be better done in the groups, like in pairs, or in the group of like up to 4 people, 6 people maximum. And then when it's done in the group, then the interaction makes mind more absorbed in it, like when you discuss together. And, I'll just translate, Madhuri. That much I'll translate. I'll translate that much. Okay. माता जी से हमने प्रश्न किया कि शीला प्रभुपाद की बुक कैसे पढ़ना चाहिए, तो माता जी कह रहे हैं पहला जो पॉइंट है वो ये है
कि जब श्रील प्रभुपाद की किताब हम पढ़ते हैं तो हमें उसको एक शेड्यूल में एक समय है, श्रील प्रभुपाद की किताबों को जो स्टडी करने अध्ययन करने का एक समय है वो एक शेड्यूल में होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि इतने घंटे में श्रील प्रभुपाद की किताब एवरी डे हर रोज वी शुड ट्राई, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम रोज किताबें पढ़ सके। तो हमें इस तरह से रोज हमें एक टाइम निकाल के, एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। द्वितीय पॉइंट जो माता जी ने कहा वो ये कहा कि माता जी कह रहे हैं कि जो पुस्तक है वो बेस्ट है, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने फोन को साइड में रख दीजिए, सब कुछ सब डिस्टर्ब जितने लाइफ में है उनको साइड में रख के एकदम इंटेंशनली एकदम मन चित्त देकर उन बुक को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि माता जी ने कहा कि जब श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें ग्रुप अकेले से ज्यादा अगर अच्छा है कि 2 लोग, कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 6 लोग पढ़े, 5 से 6 लोग। तो उससे कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी उपलब्धि और भी अच्छी होती है और दिमाग में ज्यादा अच्छे से वो जो प्रभुपाद किताब पुस्तक की जो प्रभुपाद की जो वाणी है वो अच्छे से दिमाग में और घुस जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 25 पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के हमें पढ़ना है, अकेले नहीं, साथ में कोई अगर हो तो बहुत ही अच्छा है पढ़ने के लिए। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। And the best to discuss it in the groups, like putting the questions on the topic. Like you read first some portion, yeah, like one verse or the best, verse by verse, to go verse by verse. And then you ask the question according to the topic, according to the flow of the paper. You ask the question, and then someone asking the question, someone answering the questions. To put it in the traditional, very traditional form of questions, and then answering these questions. That's how the discussion should go. This is the best. That's how all the Vedic tradition going in reading and chanting. Like the sages in Naimisharanya, they were asking Sutta Goswami, please explain to us. One by one, they were asking, they were putting different questions, and then Sutta Goswami was answering. So that's how we discuss. Yes. You want to translate? And then when I want to ask you something. You are trying, from what I understood. So we should sit with like we should have questions and answers. Am I audible to you, Madhavi? Am I audible to you? Yeah. Audible. Okay. तो माता जी कह रहे हैं कि पढ़ने का बेहतरीन तरीका है हम एक दूसरे से प्रश्न करें, बहुत सारे कि हम प्रश्न कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर ग्रुप में पढ़ रहे हैं, भक्तों के संग में पढ़ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी बैठे हैं, शौनक ऋषि के साथ बहुत सारे सेजेस हैं, ऋषि मुनिया हैं, और वो लोग प्रश्न कर रहे हैं सुत गोस्वामी को, और उसका उत्तर में वो जो है जवाब दे रहे हैं। अगर प्रश्नोत्तर में अगर हम भागवतम या कोई भी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो ज्यादा हमको समझ में आता है। वो फिर माता जी ये कह रहे हैं। Yeah, and then the third one, when you study like this for some time, then it's very good to take like systematic courses, like Bhakti-sastri courses, or then Bhakti-vaibhava courses, like intense study. First, your preliminary study in your group or yourself, and then to study like systematically in the group, like officially, because these courses are very good. They are, yeah. So first we should study in our group, and then we should go for this special courses of bhakti courses. तो माता जी कह रहे हैं कि पढ़ने का तरीका है, मैंने माता जी ने पहले कहा कि पहले हमें ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा, और फिर ग्रुप में पढ़ने के बाद फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो विभिन्न जो कोर्सेस हैं, ISKCON के भक्ति-शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सब कोर्सेस पढ़ने से हमारी जो समझ है वो और भी गंभीर होती जाएगी और भी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए हमें पहले अपना पढ़ना है ग्रुप में, फिर हमें कोर्सेज भी करने चाहिए। ये कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, ये हमें बहुत फायदा देते हैं, दिखाते हैं, आध्यात्मिक फायदा पहुंचाते हैं। Yes, Mataji, yes. Do we have any questions? I'll ask because. Yeah. Go ahead. Yes.
You're frozen. Oh, no. Okay. Yeah, it's not just okay. It was, and then how to retain the knowledge, because that's what you ask actually. Yes, Mataji. Yes. Retain. Actually, this Sangha group format is the best for this. When we share the knowledge, it stays with us. That's how I study actually. I give to others. First, I just study the materials, like preparing, and then I share with others. That's how it goes deeply in the memory. Because from the mind, it should go from the mouth. It should be spoken out so that it really go deep to the memory. So not just enough to hear, hearing, Shravana first, but then Kirtanam. You have to speak out. And in between, you should do Manana, like understanding but the best way to contemplate on what you study by preparing to this. Then you ask yourself different questions, like in the course of studying all these materials, and then you do your manana, and then you're able to speak. That's how it really goes into your memory. Also, it should be systematically done. Systematical study every day, piece by piece, and then giving to others in the same group, like you are sharing. It should be also session of sharing the knowledge, like speaking out what you already studied. It should be done. Mataji कह रहे हैं कि yes Mataji. Yeah, thus we get realization, but then not just Shravanam, Kirtanam, and Mananam, and then should be Nididhyasana. That's one more piece to deal with the knowledge, then to practice it. That's Shravanam, then Mananam, then Kirtanam, and then Nididhyasanam. It should, like 4 of them. Nididhyasana means to practice. And this is because knowledge means practice. If the practice is not there, then knowledge also goes. It will not be retained with you always. It will go. So knowledge requires practice. And Srila Prabhupada gave this formula. To know means to practice. Knowledge will stay with you if you practice it. And then specifically, it's also good to memorize shlokas, because memory is like a muscle. You know, like you train your muscles, you do like physical exercises to keep it strong, fit. Then the same with the memory, you have to exercise it. And the best exercise is to memorize shlokas. And it also gives like a special flavor to your Krishna consciousness, because our shlokas, whatever we are getting from Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, the high poetry, it's so fulfilling. The heart, it's like a poetry. You are just memorizing it, and it's wonderful. Like 100 verses or 200, no problem at all. So you just speak all those. I know the devotees at the beginning, especially, I put on my walls like different shlokas, whatever, 108 from Bhagavad Gita main shlokas, right? That's whatever we are supposed to know. And then from Srimad Bhagavatam, it was always somewhere in the field of my view, in the pursuit of my, I could see it, and somehow or other, my mind always was in these shlokas because they were everywhere. That's how I memorized my shlokas. And also I prepare the cards when I write. When I memorize the shloka, I prepare the card, like starting from the literal translation and then word by word translation, and like this. It should be done like this. With the word by word. I'll just translate, Mataji. I may not repeat so much. माताजी ने शेयर किया कि पहला स्टेप है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम ग्रुप में पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, हम समझते हैं, फिर श्रवणम, फिर मननमा, उस पर हमको सोचना है, मननम करना है, उससे हमको एब्जॉर्ब होना है, फिर हमें उसे कीर्तनम, फिर हमें किसी और को बोलना है, तो अपने ग्रुप, जो हमारे ग्रुप है, रीडिंग ग्रुप बनाना है, उसपे हमको वो जो हमने जो सीखा है उसे हम शेयर करेंगे, जो हमने सीखा,
और उससे हम कीर्तनम करने से हमारा रिटेंशन और भी अच्छा होता है। और फिर माता जी, what you said about application जिज्ञासनम? Jyasanam, what word you used? Nididhyasanam means application of this knowledge. The fourth stage of dealing with the knowledge. Yeah. So first step is पढ़ना, second is मननम, third is कीर्तनम, and fourth is निधिध्यासनम। उसका मतलब है कि हम उसको अप्लाई करते हैं। अगर हम कोई चीज लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे ज्ञान, तो वो ज्ञान खो जाता है। जैसे हमको अप्लाई करना जरूरत है। और फिर माता जी ने ये भी कहा कि हमें श्लोकों को क्यों पढ़ना चाहिए, श्लोकों का हमें ध्यान रखना चाहिए। माता जी ने खुद का एक उदाहरण दिया कि वो अपने दीवार में श्लोक लिखते रखते थे, 108 भगवदगीता के श्लोक, ताकि वो हमेशा दे दे के उनको याद हो जाए। इस तरह से श्लोक पढ़ने से हमारा मेमोरी भी मतलब एक्सरसाइज होते हैं, उन्होंने कहा। तो ये माता जी ने कहा कि इस तरह से हमें अपने जो भक्ति जो अगर हमें रिटेन करना है, तो हमको इन स्टेप्स में करना है। पहले पढ़ना है, फिर उसमें मनन करना है, फिर उसके बाद में उसमें कीर्तन करना है, फिर उसको नीति ज्ञान करना, उसको अप्लाई करना है, और फिर उसको मेमोराइज भी करने की कोशिश करनी है। माता जी, we ran short of time. We already crossed 1 hour. I think we have to again repeat the session next week or next to next week, because next week again we have a speaker. Because I can see I have so much to ask you, but then time is limitation because I have to translate also. So I would request you to again give us some time. Again, I'll coordinate with you when we can again have you on the show according to your convenience, Mataji. So today we will have to wind up the show here. And yes, Mataji, you're saying something? I'm very happy actually to share something. If it's helpful for the devotees, I'm most happy, because as we said, if the knowledge is given, it should be passed. Yes. Someone else can acquire this knowledge. That's how it came to us. Someone passed this knowledge upon us, and then we have to be transparent media for this knowledge to pass to another person like this. Then the knowledge will be retained by us. Then we can keep the knowledge. Yes, Mataji कह रहे हैं कि I just translate, Mataji, you said something very important. I have to just translate. Mataji कह रहे हैं कि जब हमें कोई मैं माताजी को बहुत खुशी है कि माताजी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और किसी को अगर फायदा होगा उससे माताजी बहुत खुश अपने आप को धन्य समझेंगे, should be happy about it. और माताजी कह रहे हैं अगर हमको नॉलेज मिलता है, हमें उसे शेयर करना चाहिए, कि जरूर अपने में ही रखना है। तो माताजी को आनंद आ रहा है कि वो हमसे ये सब शेयर कर सके। और माताजी ने रिक्वेस्ट किया है कि क्योंकि माताजी सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, कि समय खत्म हो चुका है, तो हम एक दिन माताजी को और इनवाइट करेंगे, क्योंकि माताजी से हमें बहुत सारे प्रकार के बुक्स पढ़ने के लिए अच्छे-अच्छे टिप्स मिलेंगे, जो हमें लाइफ में हम अप्लाई कर सकेंगे। तो आज के लिए माताजी को आज माताजी को हमें आज के लिए ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर से माताजी से प्रश्न करेंगे। माताजी, थैंक यू so much for giving us association, and we are very fortunate, and thank you so much, Mataji. Thank you so much. Very grateful to you, Mataji, for association. Thank you for inviting me, and all glories to Srila Prabhupada, all glories to the devotees. All glories to Srila Prabhupada, all glories to the devotees. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam, please accept my obeisances, Mataji. I'll call you and discuss with you about the next plans, Mataji. Hare Krishna, Mataji.